Ethan cycled from home to a post office. On his way back, he stopped at a hawker center to have his breakfast. The distance time graph shows his entire journey. How far from his home was the post office? Okay, so what do you think क्या करना होगा यहाँ पे? How far? So it means that you will need to find the distance. 40 kilometers? Okay, this is the entire journey. Okay, so this is the entire journey, and uh, अच्छा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे होगा? Like that will be located in between, like over here at one point, at 2 point या third point पे होगा. कौन से point पे आपका पोस्ट ऑफिस होगा? 1. या गुड, दैट्स विल बी एट 1. ओके, सो यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस होगा. सो इट मीन्स कि वो डिस्टेंस कवर करेगा 0 to A. So this will be the distance. Okay, and that is 40 kilometer. Okay, good. Part B. Which point is the hacker center? 1. 1 point is the hacker center. Yes, the A and B one. That is the post office place. On his way back, he stopped at the 2. yeah, too good. Okay, so you need to find the total time. Okay, so first of all you will need to find the time A to B. तो A to B तो आपका time obvious that's given to you 100 वहाँ पे हो जाएगा because 900 minus 800 will be equal to 100. तो 100 वहाँ से आ जाएगा प्लस ये टाइम कितना है? You will need to find this. Okay, this is the midpoint. Okay. Okay, so 50 हो जाएगा ये. Total is 100, so this will be 50. So this will be the total time. Okay, part C. Find the gradient of each of the following line segments. States clearly which each gradient represent OA. Okay, so you need to find the gradient. Okay, and last time we studied the formula. I hope you remember the formula of gradient. Yes. That is equal to Y2. Y. y2 Y. Okay, so for OA, okay, so first of all you need to write the coordinates. Okay, the coordinates यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 840. Okay, over here the coordinates will be 800 is the x value, y value is 40. Okay, and what is the coordinate at this point? 0, 0. No, not 0, 0. That is not 0, 0. That is something else. 600, 0. Yeah, good. 600, 0. Okay, so your y2 minus y1 will be equal to 800 minus 600. mm, Oh, sorry. Y is 40 minus. good 40 minus 0 divided by
800 minus 600. Good. So this will be equal to 40 divided by 200. This 0 will cancel by this 0. 2 times 4 times 1 is 4. 4 times 5 is 20. So 1 divided by 5. This will be the slope of this line. Okay, OA line. Acha, what will be the slope of AB line? Zero slope. Zero slope. Good, because this is horizontal. Acha, the slope of this line will be negative or positive? Negative. Good. Acha, so let's do this. BC line. Okay, you will use the same formula for finding the slope. Okay, so what will be your first step? You have to plot the coordinates. Okay, good. So coordinates at B point will be equal to 940. 940. Good. What is the coordinate at B point? Sorry, at C point? 1050 and 20. Okay, so your y2 minus y1 will be equal to 40 minus 20 divided by 900 minus 1050. ओके अच्छा नॉर्मली जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी टेक इट लाइक दिस बिकॉज ग्राफ यहाँ से आ रहा है इट विल मूव लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन देन इट विल मूव लाइक दिस इट विल मूव लाइक दिस ओके तो हम फाइनल को अक्सर x2 और y2 लेते हैं और इनिशियल को x1 और y1 लेते हैं बट इन लास्ट क्लास आई गेव यू दिस स्टेटमेंट लाइक कि आप कोई भी ले सकते हो इसको आप y2 y1 ले लो या इसको आप y2 x2 ले लो कोई बात नहीं है ओके तो लेट्स चेक दिस ओके हम इस तरह कर लेते हैं कि आपकी एग्जाम्पशन मैं ले रहा हूँ आई एम गोइंग टू टेक योर एग्जाम्पशन दैट इज दिस विल बी योर x2 y2 दिस विल बी योर x1 y1 so y2 minus y1 which is 40 minus 20 divided by 900 minus 1000 ओके तो ऊपर से क्या आ जाएगा 20 ओके यहाँ से क्या आ जाएगा 900 माइनस 1050 minus 150. okay so this 0 will cancel by this 0 so 2 minus 2 divided by 50 okay so this will be my final answer so यहाँ से we also prove this that you can take any value as a x2 y2 okay this is not necessary like you will not आपने कोई डायरेक्शन को नहीं देखना कि कौन से डायरेक्शन में कर्व जा रहे हैं you can take this as a x2 y2 or you can take this as a x2 y2 okay अच्छा the slope of this line will be equal to 0 okay good you can find the slope of this line hopefully you will find the slope of this line by yourself Yeah. okay next okay horizontal and vertical line I hope in today class teacher ने यही डिस्कस किया होंगे इस टॉपिक को am I right Yeah. okay अच्छा Yes. वही सिंपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सी यहाँ पे इन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू सी तो यहाँ पे आपका स्लोप ज़ीरो होगा बट द इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी दैट्स विल बी इक्वल टू यहाँ पे m आपका ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन सो योर y विल बी इक्वल टू सी अच्छा वर्टिकल लाइन का y विल सॉरी your x will be equal to a is the x axis value okay so यहाँ पे देख लो हमने कहा कि हमारे पास जो slope होता है for the vertical line that will be equal to infinity okay तो if slope is infinity then y value will be equal to infinity okay यहाँ पे देख लो तो y value ऊपर की तरफ जा रही है
ओके, और इस तरह नीचे की तरफ जा रही है लाइन, सो इट मीन्स कि y वैल्यू इज इनफाइनाइट, बट वी हैव फिक्स x वैल्यू एंड दैट इज दिस a, ओके, a इज ए कांस्टेंट वैल्यू। इफ a इज इक्वल टू 2 तो फिर आपका ये वर्टिकल लाइन 2 पे होगा, इफ a इज इक्वल टू 3 तो फिर आपका वर्टिकल लाइन 3 पे होगा। अच्छा, we also discuss this linear equation. The graph of a linear equation will always be a straight line or curved line. Straight line. Yeah, good. That will be the straight line. Okay. टीचर ने 2 से एक्सरसाइज कवर कर चुकी थी। रानिया, टीचर ने कहाँ तक करवाया आज क्लास में? Today, exercise 2C tak. Okay, 2C तक। Okay, so question 1, that's easy. Okay, that is easy, like काफ़ी आसान है, like horizontal lines हैं। Write down the equation of each of the following of the given horizontal line. So what do you think equation क्या बनेगा इसका? 6 for line 1. Yeah, y value will be equal to 6 for line 1 and for line 2. Y equals to -2. अच्छा, in the graph draw each of the lines with the following equation. Y is equal to -3. You need to plot the graph. Y is equal to -3. Should I do it on the screen? आप iPad यूज़ कर रही हो? No, but I found the option. Okay, yeah, do it. Wait, I am going to give you access. Okay, now do it. I did it. Yeah, that will be -3. Okay, good. अच्छा, y, okay, this is the value of y. Okay, there is no x value, तो आपने horizontal line draw करना है और only you will identify the value of y. Okay, x की value infinite होगी, कोई value नहीं होगी। अच्छा, for 2y is equal to 3 out of 1, 3 into 1 by 2. I did that. 7 divided by 2, that is 3.5. Okay, good. Okay, question number 2. Should I do it? Yes.
Good. Okay, equation will be like the this equation, the given line is line 1 की equation क्या बनेगा? X equals to 0.5. Yeah, good. अच्छा, read question number 3. The variables x and y are connected by the equation minus x plus 2y equals 4. Some values of x and the corresponding values of y are given in the table. Part 1. Part A. Find the value of P and of Q. Okay, so what do you think क्या करना होगा? You have to use the equation minus x plus 2y, and then to find P, you'll substitute x with minus 5. So it will become positive 5. Okay, so similarly you will also find the value of q just like this. Okay, part B. On a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on the y-axis, draw the graph of this for x greater than or equal to minus 5, x less than or equal to 5. Okay, so what we will do, we will take graph paper. Okay, just like this. Okay, so you will represent 1 unit. Okay, this will be 5 centimeter minus 5 centimeter. Actually negative sign will give you direction. Okay, so negative, so it means that you will move in this direction. Okay, negative x-axis, this is the positive x-axis direction. Okay, this will be 5 centimeter, this will be 1 unit, and 2 centimeter to represent 1 unit on the y-axis, so this will be 4 centimeter. And you will also and as you already find the value of P and Q, so you will write that over here as well. Then what you will do, you will need to draw the graph. Okay, so as we have linear equation, actually equation is also given to us. Okay, so or you can use this table instead of this equation. Okay, so you also, let's say we have the value of P, that is negative 0.5 आ रहा था अभी, so that will be equal to negative 1. Okay, 2 units, 2 centimeter represent the 1 unit, so that is my negative 1 centimeter. और Q value भी आप find कर लो, let's say या Q value को, if you don't have any Q value तो कोई issue नहीं है, because for this is the linear equation and for the graph of linear equation is a straight line, and for straight line we will need only 2 coordinates. Okay, एक पॉइंट आपको ये कोऑर्डिनेट्स होगा, दूसरा ये कोऑर्डिनेट्स होगा, सो आप स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर सकती हो. ओके, so over here I have minus 5, negative 5 on x-axis, so negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5 on x-axis, and negative 1 on y-axis, so negative 1 on y-axis, so this is the coordinate. The second point is x-axis, value of x-axis is 0 and the value of y-axis is 2, so 1 2, so this point. So from this you will draw the straight line, so this will be the graph of negative x plus 2y is equal to 4. Okay. Okay, part C. The point R into point 5 lies on the graph in B. Find the value of R. Okay, so
r is the value of x axis. Okay, this is the x axis value, this is the y axis value. Okay, so okay, so r into 0.5. okay, अच्छा यहाँ पे देख लो तो 0.5 कहाँ पे आ रहा है, 0.5 यहाँ पे आ रहा है. ओके, 0.5 आपके यहाँ पे आ रहे हैं. ओके, ओके, x value is r. Yeah, you can do it like this. You will put the value of 0.5 in this equation. So यहाँ से भी आप easily find कर सकती हो. Two times 0.5 will be equal to 1. So -3. This is the x value, so it means that the r value is equal to -3. Okay, okay, part D. On the same axis, if you have any confusion, Rania, you can ask question. Clear? Yes. Okay. Part D. On the same axis in B, draw the graph of x is equal to 3. Okay. So इसका ग्राफ जो होगा दैट्स विल बी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन. Vertical line. Yeah, that will be vertical line. Okay. Part 2. State the y coordinate of the point on the graph of -x plus 2y is equal to 4 that has an x coordinate of 3. Okay, what do you think क्या करना होगा? You have to apply this equation, and then you have to substitute x with 3. Okay, so your y value will be equal to 7 divided by 2. Okay, question number 4. Consider the equation minus 2x plus y is equal to -3. Copy and complete the table. Okay, x, y. Okay, so this is too easy. You will use this equation. Okay, और आपने टेबल को कंप्लीट करना है. सिंपल, इट मीन्स कि आप you will find the value of y. Okay, by substituting the value of x.
On a sheet of graph paper using a scale of 4 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on the y-axis, draw the graph of negative 2x plus y is equal to negative 3 for x greater than or equal to minus 1 and x less than or equal to 2. Okay, so what do you think, क्या करना होगा यहाँ पे? You have to apply the equation and then substitute the values. Yeah, तो यहाँ पे उन्होंने स्केल आपको गिवन है. सो ये तो आपको ग्राफ पेपर में हमने पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ, ओके, तो ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, लाइक इफ 1 किलोमीटर इज़ गिवन टू यू, तो आप 1 किलोमीटर को तो ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकती. सो वी विल डू स्केलिंग. ओके, वी विल टेक एग्जाम्पशन that let's say 1 kilometer is equal to 1 centimeter. So 1 centimeter on graph paper is equal to 1 kilometer in real life. Okay, so इसी तरह यहाँ पे भी हमने स्केलिंग करनी है. So scale of 4 centimeter to represent 1 unit. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये हैं, लाइक हमारे पास जो ग्राफ पेपर पे क्या होते हैं, इस तरह के यूनिट्स होते हैं. ओके, तो वो एक यूनिट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपने ग्राफ पे स्केलिंग करनी है लाइक दिस वन ब्लॉक स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस. सो दिस विल बी योर 4 सेंटीमीटर, दिस विल बी 8, दिस विल बी 12. ओके, यू विल स्केल इट लाइक दिस. ओके, और y एक्सिस पे आपने स्केलिंग 2 सेंटीमीटर करना है, फिर ये 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12. ओके, सो आपने फिर ग्राफ ड्रॉ करना है. तो 2 पॉइंट्स इज़ इनफ. तो 2 पॉइंट्स पे आपने फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. ओके, लेट्स से x इज़ इक्वल टू 0, तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू -3. सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 देन y वैल्यू विल बी इक्वल टू -3. सो -3 आपके यहाँ पे आ जाएगा. ओके, व्हेन y is equal to when x is equal to 4, then y value will be equal to 5. So when x is equal to 4, y value will be equal to 5. So वो आपके यहाँ पे आ जाएगा. So this straight line आ जाएगी. This will be the graph of this equation. Okay, part C. On the same axis in B, draw the graph of y is equal to -1. You need to draw the graph of y is equal to -1, so you will need to put the value of -1 in this equation. तो आपका x एक्सिस वैल्यू क्या आ जाएगा, so x value will be equal to 1 when y is equal to -1.
Okay, wait. We need to draw the graph of y is equal to -1. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास this is not the value of this y way. This is actually we need to draw the graph of this equation. Okay, this is equation. So इसका ग्राफ क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा या वर्टिकल? Rania. Yes. So the graph of this y is equal to -1 will be horizontal line or vertical line? Horizontal. Yeah, so this will be look like this. Okay, find the area of the trapezium bounded by the line -2 and y zoom and the x and y and the x and y axis. Okay, so you need to find the area of the trapezium. Okay, trapezium कौन सा? ये वाला area. You will need to find this area. Okay, ये कुछ इस तरह बन रहा है. Okay, so what is the formula for finding the area of the trapezium? Do you remember this formula? I think half into base into height. Half h into a plus b. Oh. H is the height and a and b are the parallel sides. This side is parallel to this side, so this side will be a, this will be b, this will be h. Okay, so h आपने किस तरह फाइंड करना है? h आपका क्या आ जाएगा? This is 0, this is 0 और यहाँ पे आपका -1 है. सो h तो आपका -1 आ जाएगा, बट एरिया आपका नेगेटिव में नहीं आता, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे h का. ओके, एरिया हमेशा एरिया हो गया, वॉल्यूम, एरिया एंड लेंथ, सॉरी नॉट लेंथ, एरिया वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव साइन में होगा. ओके, लाइक दैट शुड नॉट बी इन नेगेटिव. लेंथ में हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज इन पॉजिटिव. ओके, एक्चुअली length में like if it is given to you that length is equal to -6 centimeter, so it means that the magnitude of this length is 6 centimeter, and this sign will give you the direction. Okay, it means that you will move in the negative x-axis or negative y-axis. Okay, so this sign will give you the direction. If it is in positive 6 centimeter, so it means that you will move in positive x-axis or positive y-axis. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया, वॉल्यूम सारे हमारे पास, सरफेस एरिया हो गया, दैट्स विल आल्सो बी इन पॉजिटिव. ओके, सो h value will be equal to 1. what will be your a and b value? So this is your a वैल्यू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? If y is equal to 0, then x value will be equal to, because at this point your y value is equal to 0, so we need to find the x value. So y value will be equal to 0, तो x value आपका क्या हो जाएगा? This negative will cancel out by this negative, so 3 divided by 2, which is equal to 1.5. So x value at this point will be equal to 1.5 when y is equal to 0. ओके, तो x वैल्यू आपका यहाँ पे 1.5 आ जाएगा और ये आपका 0 है यहाँ पे, तो 0 एंड 1.5, तो 1.5 आ जाएगा. b वैल्यू, b इज द लोअर साइड, दिस वैल्यू. ओके, तो b वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे क्या होगा? This is the interesting question. Okay, very interesting question. अच्छा, this is that point at which these two lines are crossing, like
लाइक दिस। ओके, यहाँ पे देख लो, तो इस पॉइंट पे ये लाइन भी जा रहा है इस तरह, and the second line is like this, horizontal line. Okay, equation of this line is y is equal to -1. Equation of this is minus 2x plus y is equal to -3. Okay, अच्छा, इस पॉइंट पे देख लो, so this point lie on this equation. Okay, and this point also lie on this graph. Okay, having this equation y is equal to -1. So what we will do, we will need to find the x value. So what at this point, so what we will do, you will need to substitute the value of this in this equation. तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. So your x value will be equal to 1. So 1 आएगा यहाँ पे. So this is 1 and this is -1. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 minus 1. अच्छा रानिया, यहाँ पे -1 होगा या 0 होगा? Actually this is the horizontal line and we need to find this magnitude. So यहाँ पे x axis की वैल्यू क्या आ रही है? that is 1. सॉरी, यहाँ पे x axis की वैल्यू को हमने देखना है, नॉट द वैल्यू ऑफ y axis. ओके, y axis की वैल्यू को हमने नहीं देखना है यहाँ पे. So x axis value at this point will be equal to 1. No, at this point. यहाँ पे देख लो, x axis वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1. No, this one. This is the origin. ये आपका ग्राफ इस तरह. ये आपका ग्राफ है. ओके, तो यहाँ पे x एक्सिस वैल्यू क्या है? 0. Yeah, 0. Okay, so b value will be equal to 1 because 1 minus 0 will be equal to 1. So ये आपका आ जाएगा 1.5 plus 1 will be equal to 2.5 divided by 2, which is equal to 1.25. This will be the area of trapezium. Okay. अच्छा, now I am going to explain this again, that why I am going to put this value y is equal to -1 in this equation. Okay, if this graph is given to you, so one line is this one having this equation. अच्छा रानिया, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, so that coordinates will satisfy this equation, right? Like if I take this point, like I take the coordinates at this point, x axis value और y axis value मैं ले लूँ, and if I substitute the value of x and y in this equation, then that will satisfy this equation. Okay, satisfy means ke this side will be equal to -3. Okay, or if I take at this point, या ये पॉइंट मैं ले लूँ या ये पॉइंट मैं ले लूँ, तो कोई भी पॉइंट आप ले लो,
तो वो सारे पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. बट इफ़ आई टेक दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ए पॉइंट. If I take the coordinates of a point and if I substitute that coordinate in this equation to negative 2x plus y is equal to negative 3, तो ये equation satisfy होगा कि नहीं? Yes. How? As a point is not on this line, on the graph of this equation. It will not satisfy this equation because a point is not on the graph of this equation. Okay, what about this point, B point? The coordinates at B point will satisfy this equation or not? No. Why? It will satisfy this equation because this point lie on this graph, this straight line. Okay, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. Got it? Yeah. Yeah, if you take coordinates at this point, coordinates means के x axis value and y axis value, and if you substitute the value of x and y axis value in this equation, then that value will satisfy this equation. Okay, Rania, what do you think? This C point will satisfy this equation or not? हेलो रानी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या ग्लिचिंग हो रही है? I can hear it. कंफ्यूज हो रही हो? Yes. Okay. Actually, if you want to draw something on graph, okay, and nothing is given to you, then your question should be look like this: that sir, give me the equation so that I will draw the graph. Okay, so on the basis of an equation you can draw the graph. Okay, if equation is not given to you, then you will not be able to draw the graph. Okay, so let's say I am giving you this equation. Okay, so what you will do, you will check this equation that either this is linear equation or non-linear equation. So yes, this is linear equation, so the graph of this linear equation will be straight line. So for straight line you will need only two coordinates. So what you will do after this, after getting this equation, then you will draw the line like this on graph paper and you will do scaling. Okay, after this scaling, then you will put the value of x axis in this equation and you will find the y value. So if x is equal to 0, let's say x is equal to 0, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ.
then I will find the value of y. So this will be -2, 0 हो जाएगा. So your y value will be equal to -3. So when x is equal to 0, y value will be equal to -3. तो ये आ जाएगा. Now for second point, let's take this x is equal to 1. So when x is equal to 1, then y value will be equal to so your y value will be equal to -1. So when x is equal to 1, y value will be equal to -1. So ये पॉइंट आ जाएगा. So यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. सिंपल. अच्छा, now all points lie on this straight line will satisfy this equation because this is the graph of this equation. Okay, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, सेटिस्फाई मींस के इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी. ओके, गॉट इट? Yes. या यहाँ तक समझ आ गया आपको? बट इफ आई से Yeah. दैट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज दिस पॉइंट not lying on this straight line. Okay, yeah, on this graph. Okay, so that's why ये point इस equation को satisfy नहीं करेगा. Similarly, this point will also not satisfy this equation. This point will also not satisfy this equation, and this point as well. Okay. अच्छा, if another graph is given to you, that is this one. Okay, so and the equation of this is equal to -1. Okay, तो कोई भी पॉइंट आप इस पे ले लो तो वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. यहाँ पे देख लो तो y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे देख लो तो y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो तो y की वैल्यू -1 है. अच्छा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो. दिस इज द दिस इज द यूनिक पॉइंट. ओके, दिस इज द यूनिक पॉइंट विच लाई ऑन दिस ग्राफ, ऑन दिस लाइन, and this point also lie on this straight line. Okay, so it means that this point, which is known as a point, let's say this is known as a point, so a point satisfy this equation and a point also satisfy this equation. Okay, so it means that the value of y in this equation will be the value of y of this equation. Okay, यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी, इस वो वैल्यू आप y की वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती है. ओके, सो दैट्स वाई इन लास्ट फ्यू मिनट्स पहले मैंने क्या किया है कि आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन एंड आई फाइंड इट द वैल्यू ऑफ x एक्सिस. ओके, बिकॉज आई नीड x एक्सिस वैल्यू फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो इसी वजह से मैंने y इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दिया था और मुझे x एक्सिस की वैल्यू आ गया था. ओके, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. लाइक एडवांस लेवल में बस यही पॉइंट एडवांस लेवल का था. ओके, बाकी सारे जितने भी मेथड्स थे वो बेसिक मेथड्स थे which we already did in this exercise.